Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Shivani. How are you? I'm good, ma'am. Ready for your first mock PI? Yes, ma'am. Yeah. So, chalo, quickly I'll introduce you to the panelists. We have Krishna sir. He is the regional head of Pehel Bangalore Center and NIFT alumni with expertise in industry. Also, we have Dr. Himani ma'am. She's a professor and HOD of Textile and Fashion Department of Sushant University. So, I'll just hand over to Krishna sir. Maybe he'll start the interview. Sir, I request you to start, please. Thank you, thank you. How are you, Shivani? I'm good, sir. Well, relax. Just introduce yourself. I'm Shivani and I'm from a place which is known as the gateway of Chamba and Kangra Valley. That is Pathankot in Punjab. I belong to a nuclear family which is led by a strong woman, that is my mother. She is playing both the roles of father and mother brilliantly. Last year I have done my graduation in fashion designing in RRM ke Arya College in Pathankot, affiliated by Guru Nanak Dev University. And I have also done a 1 month internship in Berg Acrylics Private Limited at in Ludhiana. So that's your achievement. All right. Ma'am will ask you a couple of questions and I'll come back. Thank you. Over to you, ma'am. Hi, Shivani. First and foremost, please relax. This is a mock interview, and we are here to help you and to plan on your journey to be a better person. And don't go up and down. So your screen is also doing this. Just relax, right? Okay. Tell me any two subjects that you enjoyed during your graduation in fashion design. Any two subjects that were very, you were passionate about. Uh, One was the basics of sewing and about needlework. Another subject was needlework. Basics of Okay. needlework. And what? All right. And what did you enjoy in that? In needlework, we were taught about different different needleworks which we have in our country and from different states, how it is different from each other and how they are evolved. Can you tell me any four stitches that are there in the Kasuti work and which state is it from? Have you heard the word Kasuti? Yes, ma'am. Should I give you options? Sorry, Relax. ma'am. It's okay. It's okay. You can brush your knowledge. Some information is to be memorized. Yes, ma'am. So you remember something Karnataka, Murgai, Menti, Negi, some of the stitches. Yes, ma'am. Kantha is from Kantha is from West Bengal. what is the can you give me what is a very basic ethos of a Kantha embroidery? I'm not talking about the skill, I'm talking about how it evolved. Kantha. The basic principle. It is worked as in household industry. The women there used to do kantha, and the motifs they used were more about nature and just It's okay. Fine. Shivani, that's okay. Relax.
So you preparing for which course or program in future? For MDish. I'm preparing for MDish. Masters in Design, right? Ma'am. Shivani, I think there is a technical glitch from your side. Could you just adjust a bit? Yes, ma'am. There is some technical glitch from your side. The panelists are unable to. Your voice is breaking, right, ma'am? Yeah. Yeah. Your voice is breaking. There is some network issue. Can you hear us, Shivani? Yes, ma'am. I can hear you. Yeah, ma'am, I think she can hear us, but the video is pausing. A bit better? Shivani, do you want to stop your video for a while and then give an answer? Probably we'll be able to hear better Okay, ma'am. for now, and then you can switch it on again. Okay, ma'am. Okay, so what does design mean to you? If you say MDes, Masters in Design, what comes to your mind when you hear the word design? Design is a way in how you use different things and cater them in a way that they are helpful to society and to you also, and how design is like a problem solver. Design is not like just mix and merging different things. It is a problem solver. You can identify a problem and can solve it by designing also. Okay, over to you. Can you hear me, Shivani? Yeah, over Yes, to ma'am. you. Sir, he'll ask you a few questions now. Yeah. Shivani, I mean, just I think network is also lagging. You are also not comfortable while. So first up, relax ho jao. So how are you feeling? Good, sir. A little bit nervous. सच में बताओ कैसा लग रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो नहीं हो रहा आपको? शिवानी? No? Yeah? Shivani? Shivani, you can start your video, I feel. No, I think let it be, ma'am. The audio itself also it's lagging. So, शिवानी क्या हो रहा, आप बोल नहीं रहे हो या ये लैग कर रहा है नेटवर्क का, क्या हो रहा, क्या प्रॉब्लम? The important thing in PI is wherever the and whatever is the student level, वहां से हमें शुरू करना है. तो अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो we'll make sure that you speak complete sentence, at least 5 sentences in front of us, be it any topic. किस कोर्स पे आपने डिजाइन करा है ये बताओ. को स्पेशलाइजेशन क्या था आपका? फैशन डिजाइन? Yes, sir. फैशन डिजाइन में जो भी आपने किया, आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट वी कॉल्ड और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट और जो भी करा है आपने, उसके बारे में जस्ट स्टॉक इन फ्यू लाइन, कंप्लीट सेंटेंसेस, यू नो. नहीं था ऐसा कुछ? ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट नहीं था? No, sir. It was my last year was in 2020 ना. So, अच्छा, we have done. तो चलो पेंडेमिक के बारे में ही बताओ आप 2-3 लाइन, क्या जानते हो? What is 2020 is all about? क्या हुआ था? 2020 सी आंसर क्या होना चाहिए? आप ना याद करो. चलो अब और इसको ब्रेक डाउन करते हैं. We'll talk in single sentences. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप एक एक सेंटेंस में बात करोगे. कहां से शुरू हुआ था? ओरिजिन कहां था इसका? इसे स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, कौन से जगह पे, किस सिटी में, कहां हुआ था? 2020 was all about COVID-19 and it शिवानी, मेरी originated. आवाज भी नहीं पहुंच रही है क्या आपके पास? I'm getting you, sir. क्लियर सुनाई दे रहा आपको? Yes, sir. राइट? Yes, sir. आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, बात कर सकते हो मेरे से?
Yes, sir. हाँ ना, बताइए ना। Yes, sir. हाँ, तो हिंदी में बात करिए आप। मुझे ये बताइए आप, मैंने आपको अभी बताया, पूछा आपसे, जो कोविड-19 कहाँ से शुरू हुआ था, ओरिजिन कहाँ था, उस सिटी और उस कंट्री का नाम बताइए। It was originated in Wuhan, in China. हाँ, उसी को बोलना है। यू शुड से इन दिस वे रेदर देन आप जो पॉज डाउन कर रहे हो ना, सोच रहे हो, फिर इसको आपको डेवलप करना है। 10 टाइम्स प्रैक्टिस करके डेवलप करना, बट यू हैव टू डेवलप दिस। क्या डेवलप करना है? It's originated in like started in Wuhan from China. आपको वैसे बोलना है, चाइना के एक सिटी वुहान में ये शुरू हुआ था। द फर्स्ट केस वहां पे हुआ था, राइट? पहला सेंटेंस ये होगा। दूसरा, इंडिया में कब हुआ था ये? फ्रॉम देयर यू हैव टू कम फॉर इंडिया इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोविड-19। तो उसके बाद इंडिया में कब हुआ था और फर्स्ट केस कब में ये आया था? मंथ में बताओ आप, डेट छोड़ो ना, आई मीन लीव इट। ये कोई आपका जॉब की इंटरव्यू नहीं है, मंथ बताओ। It was in January, I think. हाँ, तो वैसे बताएंगे। इट्स स्टार्टेड इन द ओरिजिनेट स्टार्टेड इन वुहान and which is in China. In India, we found the first case in month of Jan 2020, and from there last 15-16 months we are facing a problem and crisis in terms of what? Economic, social, I mean, like, and then the health wise everybody is having a problem, right? Mental health, किसी को stress हो रहा है, किसी को virus हो रहा है, ऐसे है। तो ऐसे 4-5 पॉइंट बनाइए, वैसे 4-5 पॉइंट डिजाइन का बनाइए, एंड दिस यू हैव टू वर्क। आपको बहुत प्राइमरी लेवल पे काम करना सिखानी, ठीक है? और पूरा बात करिए। क्या बात करना पसंद है आपको, ये बताओ। हॉबी के बारे में आप बात कर सकते हो, अपने बारे में बात कर सकते हो, 3-4 लाइन आराम से, इजीली। Yes, sir. तो बोलो फिर, आप इतना कंफर्टेबल फील करो। बोथ ऑफ अस, आई मीन, आप चाहते हो हम दोनों वीडियो ऑफ कर ले तब आप कंफर्टेबल रहोगे? डू यू प्रेफर टू टॉक अलोन, लाइक कुछ लोग होते हैं ना बाथरूम सिंगर, ऐसे नहीं गाते हो ना। I'm the one, like, I can't sing in public. So ऐसा आप क्या चाहते हो बताओ? बंद कर ले वीडियो फिर आप बात करोगे? No, sir. नहीं, तो आप सिर्फ वर्ड्स में बात कर रहे हो तभी से, आई थॉट ओके इट्स मोर टेक्निकल, मे बी सब्जेक्ट की बातें हो रही तो प्रॉब्लम हो रहा है आपको। सो एंड इफ यू विल से ओके यू आर डिजाइन ग्रेजुएट, ऑब्वियसली दे विल आस्क यू टेक्निकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन, है ना? Yes, आई वाज थिंकिंग टू आस्क यू, जो आपने जो पहना है वो जो उस पे जो है ना, जो टेक्सटाइल है ना, ये इसको कौन सा क्या बोलते हैं, इसको पता है आपको? क्या है वो? so it's the floral print. अच्छा, वो प्रिंट है, डिजिटल है या इंडिगो है? ये हैंड Digital. डिजिटल है। अच्छा, क्लियर, पता मुझे। तो जो भी है, आई मीन, वेल, कुछ बताओ आप, 3-4 लाइन कुछ भी बोलो, घर के बारे में बात करो आप, जो भी कंफर्टेबल हो। Shivani, listen, Yes, relax. please. As Sir is also saying, it's okay. You can come start again. One thing is technical aspect. One is also your personality. You may be very good in work, लेकिन अगर आप उसको आगे आके you are not able to explain your work, तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे. That's what we are trying to do. Sentence formation is very important. As Sir is also suggesting, start from a very basic elementary level, write down and memorize it and try. बिकॉज जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि आपके 2 सब्जेक्ट्स जो आप बहुत पैशनेटली आपको और अच्छे लगते हैं, तो आपने मुझे 2 सब्जेक्ट्स बताए, उसमें से मैंने आपसे एक सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछे. आई डोंट से दैट यू शुड नो 100% ऑफ दैट सब्जेक्ट, बट बेसिक्स आपको आने चाहिए. So you have to read. One is the technical component, जिसमें आपको पढ़ना जरूरी है, whichever subjects that you've done. But also, let's face it that we have to work on our personality. And there's nothing wrong in it. Everybody has their own way of learning. है ना? There is a graph. There's no race, but you understand the world is very competitive. Yeah, but it's not to pull you down. We want you to be better than what you are, a better version of yourself. So जब आप इस
इंटरव्यू से एग्जिट करेंगे, बी अ बेटर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कि मुझे अपने ऊपर इस पॉइंट पे काम करना. दैट्स ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू डू, है ना. वी आर नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, मेक यू नर्वस. वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू identify the points where you need to work. Yeah. करोगे आप इस पे काम शिवानी, Yes, sir, definitely. है ना. मेरे से आप ऐसी बात करो, नॉर्मल बात करो, जस्ट लाइक अ फ्रेंड. या ऐसे बताओ, कुछ भी ऐसे शेयर करो, आपको कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है. आई जस्ट वांट यू टू रिलैक्स, लाइक यू नो, बताओ कुछ अपने बारे में. भूल जाओ आप इंटरव्यू हो रहा था या हो रहा है. या दैट इज forget about it. This is my first time I'm doing this, and I have never done public speaking ever before. बस इतना ही डर है. Yes, अपने that's बेस्ट what. फ्रेंड से बात करते हो कि नहीं, ये बताओ. बात होती होगी. No, sir. You must be like you know, having a conversation with your best friend. Yes, sir. Who is your best friend? Yeah, asking her name Manmeet. Her name is Manmeet. ठीक है. तो आप जब बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो तो कैसा लगता है आपको? How do you feel? Yes, I feel great. बात करते हो, वहां भी तो बात करते हो, यहाँ भी बात करना है. That's it. इतना ही करना है. You should feel the same. Relax, calm down. शेयर करके अच्छा लगना चाहिए, है ना. अभी इंटरव्यू के जस्ट बाद आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करो, उनसे बातें करो, so that you can come out of this zone. Possible नहीं, अभी आप उस जोन में चले गए हो तो obviously I mean it will take time to come out of this. If I'll try also नहीं हो पाएगा. तो वो करोगे आप. उसके बाद you just do something else, whatever you like. I mean आपका जो भी हॉबी है, और उसके बाद you make sure you start working on it. Write the key point of learning today, keynotes. So what is the learning, what you have to improve, what all things you have to work after all this. अभी नहीं करना है stress लेके. All right, and then start working on that in a phases. Divide. तो 1 hour इस पे काम करेंगे, and then 1 hour कुछ और करेंगे. क्यों? क्योंकि आप ना लगातार करोगे तो बहुत प्रेशर में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, बहुत सारे सवाल आएंगे, फिर आपकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी. अब सबसे पहले खुद को खुश रखना है. You make sure you are happy, energetic, eating, having everything. You are shortlisted. You have done so well. Yeah, there are so many students not even shortlisted for an IFT. है ना. चलो, good luck. Thank you. Anything, ma'am, from your side? Good luck. चलो. Yeah. World is yours. You just have to believe in yourself. Yes. Yes, sir. Thank you, Alright. Shani. And these people are here to facilitate you. The panelist is very good, okay? So you can be as you are, not a problem. They'll always guide you, right? They are very Yes, ma'am. calm and composed. You don't need to worry at all, okay? Yes, ma'am. Chalo, we'll get back to you with the second mock PI, and I feel you'll be a bit more adjusted till then, right? Yes, ma'am. Sure. Chalo. Definitely it will. Okay. Yes. For now, you can exit the meeting, please. Okay, thank you, ma'am. Thank you.